Mhm. Hello and welcome to my channel. Please subscribe. Thank you so much for subscribing. Please share the stream. In this stream, I will show you how to install Astra. Let's get started. I will show you how to install WordPress and set up Astra theme. The first thing that you need is a hosting account. So I will be using infinityfree.com. You can click on login, and over here we have the login info. We can go ahead and click on login with Google. If you already have an account, click on the name. We will use one of this. For example, let's use this one. I will log in. So this brings us to our dashboard. The first thing that I'm going to show you is how to create an account. So click on create account. Over here, select Infinity Free, which is free forever plan. You don't get email accounts, you don't get control panel, you won't get unlimited hits, you don't get PHP version selection, you won't get PHP mail support, but this is fine because we want a free account. So we'll just click on create new. What that does is it is setting up a new account for you. So we want to choose a subdomain because we haven't brought a domain name. We will be going with the free subdomain. For example, example.whois.com. These are the domain name selections that we get. Click on add subdomain, and you see all these are the domain names that you get. You can go with 42web.io, and I'll call this zzz.42web.io. Click on check availability, and what that does is it gives you the label for your account, which is automatically done. Then you get the account username, which will automatically generated, which is automatically generated. Then you get the account password. Okay, and then for consent, click on I approve. Email consent, click on I approve, and then click on create account. Now what happens is it creates a domain name for you. In this case, that is our domain name. If I click on open a new window, just the domain name, you should be able to see that it is live and working. It says DNS resolution error. That is common, and it takes a while to create the domain name to be accessible, right? It says over here, read this message. It
can take up to 72 hours for new domains to be accessible everywhere. This is caused by DNS caching, which Infinity Free cannot control, but there are some workarounds you can try. So over here, now the domain is not active is what they are telling, but within about 5 minutes you should get a working domain. Okay. Now as of now it is saying that it has DNS resolution error. That shouldn't be a cause of worry for you. What you do is you click on manage. Once you click on manage, over here you get the status. The htdocs is created, the directory is existing, and then the file name is there, which is index.html. Click on open file manager just to test this out, and it will log into the file manager automatically. Here I want to create a new file. I will call this index.html, and I will just put a hello over here, and I will close the h1 tag. What I am trying to do is I created a file called as index. Now if we see hello, that means that the DNS propagation issue is fixed. Let's give it some 5 minutes. Till that time I will teach you something else over here. You can check the DNS records till then and just see that the record is there. The A record is there, and it should be pointing to the let's give it some time. So you understood how to set up the domain name? Okay. The next step that I will show you is how to activate the account. You go to hosting accounts and then check your if your account is active. Again, it is still saying the same thing. So what I will do is I will go to home. Now you already know how to create a domain name. Now I will select the other account. I will go to hosting accounts, and I will proceed with the tutorial using this one. I will just click on this, and I will go to file manager. What I will do here is I want to go to htdocs, and I want to delete everything except the folder called as 1 because I have something inside it. Now I will go up and I will remove some of the directories that I don't need. I don't need Softaculous directory. I don't need mail directory. I don't need the cPanel directory. Okay. I don't need the PKI directory. I want to delete all these files as well because they will be automatically generated. Okay. Now we have an empty directory on which we can install the WordPress. I will click on scripts installer. What that does is it will bring up the Softaculous installer.
On the left hand side you see blogs, click on it and click on WordPress. Now this is the WordPress installation screen. What you do is you click on install now and you select the domain name on which you want to install. In this case, ecotales.nv.uk. Then you can click on site name. You can call this anything you want. I will call this Ecotales. And you can put the site description. Ecotales is a technology business. Then you put the admin name and you need the admin password. Please keep this handy because you might need this shortly. So just come down and put the password right here. Now here we have the language selection. Select English here or any other language that you want. For example, you have all these languages using which you can install WordPress. In our case, we will choose English. Go to advanced options. You can rename the database. You can call this WordPress 1 if you want. And you can auto upgrade the plugins and themes. I will call this WP101. We are renaming the table prefixes as well. Then click on install. What is it doing is it is going and copying the files and folders. And our WordPress installation is active. This hosting provider is not working. I will show you how to do it. Search for free hosting directory and then you get these. So here this is a free hosting provider. Click on sign up. This is what you get: 10 GB of disk space, unlimited bandwidth, one hosted website, one email account, one MySQL database, no subdomains, no aliases. So this
cannot be used by us. Let's just try free domain name. We click on this free domain dot one. We'll just call this santosh.run.place. I will check the availability. Click on claim this domain name. You have to sign up over here. Click on sign up with the account and then click on sign in with Google. Okay, what we can do is username. I will just call this Santosh J, and password I will just enter that, and I will enter the email address, and I will click on sign up. What that did is we have to verify the email address. Now I will log in and verify the email address. I'll go to more and then now we are ready to log in. Okay, now we have my services. We can look at the domains over here. It says free domain 0, registered domain 0. So click on add a service and domain registration. Here we can put the domain name and click on claim this domain name. And over here you can see that the domain name run.place is available. For 1 year it is free, right? We need this IP address, copy this, click on submit.
You can open and check the domain name to see if it is working. It's not working at the moment. Let's see what happens when we Google free domain. What we see in the results here is GoDaddy, so domain plus free website builder, plus free website logo LLC. If we click on the GoDaddy ad, they want us to register a .com domain, something. सही से बताइए तुझे मेरा दुबई घूम के मजा आया ना? तू ये बता तुझे मेरा दुबई घूम के ज्यादा मजा आया कि नहीं आया? मैं कह रहा हूँ Hey guys, welcome back to my vlog channel और guys जैसा कि आप सबको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने और मयंक ने आधे पैसे मिला कर ये प्यारी सी गाड़ी खरीदी थी, जिसके बाद हमारे बीच कलेश शुरू हो गई कि गाड़ी रहेगी किसके पास। अब जिसका सोल्यूशन हमने ये गाड़ी 6 महीने शुरू के इसके पास रहे और मैं चाहता हूँ शुरू के 6 महीने मेरे पास रहे, क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं ध्यान रखूंगा। ये तो नहीं है यार, ठोक देगी। ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि हम लोग करने वाले एक चैलेंज, लास्ट टू लीव द कार। 24 आवर्स चैलेंज नहीं है ये, चैलेंज उतर नहीं जाता, इसलिए 3 दिन तक भी चले और ये 2 घंटे में भग जाएगी। हाँ, वो तो लड़कियों में स्टाइल ज्यादा होती है रहने की। लड़कियों का टॉयलेट भी ज्यादा है। तो मैं डायपर पहन के आई हूँ तो चिंता मैं मत तो कर। बोतल लेके आया हूँ, तू भी चिंता मत कर। अरे राम, कितना करना है तू यार। निशु अब भी सोच ले भाई, प्यार से काम चल जाए। नहीं उतर भाई जा। ये शादी पार्टी में कहीं जाना, बाकी तू कैब से इतने सालों से घूम रही है, वो 2-4 महीने थी जो तेरे नाम पे चलाने के लिए। निशु है ना, गर्मी लग रही है ठंड के मौसम में, पागल है। अब मुझे तो देखो गर्मी लग रही है। इतना हॉट है कि इसको लग रही है गर्मी। अब गाड़ी चाहिए तो थोड़ी सी ठंड झेल लो यार, अपन भी तो झेल रहे हैं। तो देख भी नहीं रहा गाइस, एक तो शीशा निकल रहा। भैया 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 मेरी एक हेल्प कर दोगे छोटी सी? बोलो। ये ना हमारा एक चैलेंज चल रहा है, ठीक है? क्या चल रहा है? चैलेंज चल रहा है। मैं ना गाड़ी से उतर नहीं सकती, ठीक है? आप प्लीज मेरे लिए एक चाय ला दो, मैं पैसे दे दूंगी। प्लीज प्लीज। नहीं ला दे, ला दे। मैंने डरा दी। थैंक यू भैया। ये लो पैसे पकड़ लो इसमें। पैसे दे दो। नहीं नहीं आप मत दो। अरे भैया चैलेंज में पैसे देना नहीं था। थैंक यू भैया। और भैया कितने भले थे, वो मेरे लिए चाय भी लेके आए और मेरे से चाय के पैसे भी नहीं लिए। गाइस भैया के लाइक जरूर कर देना। गाइस अभी बज रहे रात के 10:48। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ लोग थक चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, तो ये जो हमारा चैलेंज है ये अब खत्म हो जाएगा 1 आधे घंटे में, क्योंकि ये होना ही चाहिए। क्या हो गया, क्या हो गया? भाई मैं पूरी रात गाड़ी चला रहा हूँ, क्या करूँ? थोड़ी तो भाई उतर जाओ यार, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें सोना, पूरी रात गाड़ी चलाई यार, मैंने सोना थोड़ी देर। तो भाई तुमने भी तो मुझे दिल्ली से जयपुर लाके पटक दिया। भाई उतर जाओ ना, उतर क्यों नहीं जाते?
अब तेरे साथ जो होगा ना, अगर तूने वो सह लिया तो बस मैं खुद ही आ रहा हूँ। एक चीज मुझे करनी है, अगर उसके बाद भी ये गाड़ी में डटी रही तो मैं मान जाऊंगा कि विनर है और मैं खुद गाड़ी छोड़ दूंगा। मुझे पूरा यकीन है अपनी उस चीज पे कि उसे देखते ही निशु यहाँ से गाड़ी से क्या हो सकता है जयपुर से भाग जाए पैदल। अब बता दे क्या है। बुला ले जाए बाबा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Run. यार मैं नहीं खेल रही इसके साथ, यार एक भी फेयर गेम नहीं खेलता, सांप वाप बुला रहा है, इतना घटिया गेम खेलता है। मेरे को ना इसकी गाड़ी में बैठना ना, मुझे ये गाड़ी चाहिए, नहीं चाहिए तो जा यार यहाँ से। भाई मुझे नहीं खेलना यार, रेड कल तू खुद ही खेल ले, कल तू फेयर गेम खेला कर यार। मेरे घर करने रुक गए, पता है मेरा हाथ कांप रहा है। सॉरी, ये डर गई बेचारी। ठीक है, बट चैलेंज में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड तू गाड़ी भी रख ले, मुझे नहीं चाहिए। गाड़ी की बात नहीं है पागल, चैलेंज तो चैलेंज यार, मैंने गाड़ी के लिए चैलेंज की नहीं करा है। लाइक कमेंट से के लिए बोलते बेचारी, तू ही बोल दे गाइस, गाइस को कुछ नहीं बोला जा रहा, बेचारी ने बहुत मेहनत करी है चैलेंज में। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार इसकी वीडियो को, और कमेंट करके ना इसको गालियां दे देना, बता देना कितना ही गंदा कमेंट करके बोलना कि मयंक ने जीतने के लिए सब कुछ किया। मयंक की